It was all about the second medium. So understand it very carefully. This mu is also called as refractive index of the second medium with respect to the first medium. The second medium with respect to the first medium. The refractive index of second medium with respect to the first medium. Understand this point always. जो भी second medium होगा उसका refractive किसी की आवाज आ रही है भाई keep these things quiet and from you please don't bother this session please now जो भी mu की value होगी that the value of that mu is recorded as a 1 mu 2 1 mu 2 now 1 mu 2 means refractive index of second medium with respect to the first medium. Always please understand. We never call the refractive index of first to the second. It is always called as बोलिए बच्चों क्या बोलते हैं इसको the RI of second to the first with respect medium with respect to first medium. With respect to the first medium. इस बात को प्लीज सब लोग ध्यान से समझ लीजिएगा. So refractive index तो 1 mu 2 so medium 1 कौन सा हो गया? Well, like what traveling earlier was medium 1 and goes to second medium is what it's providing the change of density and also you know you can say light has to change its velocity because of the second medium only. So जो भी change आया है light में जो भी इसकी velocity में change आ रहा है it is all because of the second medium. So it is a refractive index RI refractive index of the second medium with respect to the first medium. So 1 mu 2 तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में बनेगा बोलो आदित्य सोनी first medium एंगल ऑफ आर कौन से सेकंड मीडियम में बनेगा और हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम that is what the refractive index is all known about. So sin I upon sin R is always equal to refractive index of second to the first. Okay. Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. So Yes, sir. this diagram or this picture all here, it is only depicting the same thing to you all. So I'm reading it from here. The constant is called the refractive index of second medium, first medium. Ri has got no unit because it's ratio of two same quantities. क्योंकि वो दो same quantity का ratio है. That means Ri can be 1, it can be 3 upon 2, it can be 2 upon 3, it can be 4, whatever. But it will not be negative. Remember this, bachcho. Ri is never negative. It might be equal to 1, it is also never be 0. It will be 1, less than 1, or greater than 1. But Ri will never be equal to 0. And Ri will never be equal to a negative value. Please mark these points in your copy on your book somewhere. Okay? You understand that? So it is a medium 1. Yes, sir. It is Yes, medium 2. Medium 2 has offered a light different density. Light changes velocity. Angle R तो medium 2 में बन रहा है. Angle I medium 1 में बन रहा है. So 1 mu equals to sin I upon sin R. And this is also the refractive index of second medium with respect to the first medium.
Is that fine with you all? Understand that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now, Aviva, I will take the second slide later. I just want to discuss more things with you about the refraction. उसके बाद बच्चों मैं book पे आऊँगा. I always teach this topic. First, I teach myself. Then I go on the book and all. पर हम book से पढ़ते रहेंगे. Does not matter. But I want to clear the concept for you first of all. So if I take a little more time about this, so don't be in haste with this chapter. 10 दिन लगेंगे इस चैप्टर को पूरा समझने में और समझाने में. जल्दबाजी की कोई बात नहीं. Understand? जो भी जल्दबाजी में है, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सब ये सब अभी कुछ भी नहीं पता है. कार्तिक सिंह was not studying and he has left the group and only is not taking my phone. किसी की बात हुई कार्तिक सिंह से आप लोगों में से? आदित्य सोनी? नहीं सर, मेरी नहीं हुई. हाँ बेटा? सर मेरी नहीं हुई काफी समय से. किसकी बात हुई आदित्य सोनी से? कौस्तुभ तुम्हारी? कौस्तुभ? Anyway, we are continuing. So, अब अंडरस्टैंड बच्चों एक बार ध्यान समझिए बहुत जरा कि कब आर आई 1 से ग्रेटर होगा और कब आर आई 1 से स्मॉलर होगा. इमेजिन करिए एक मीडियम. ओके, मान लीजिए ये रेयर मीडियम था. टेल मी क्या होगा लाइट के साथ? It बोलिए. will bend towards the normal. It will get deflected towards the normal and it's decrease. Bend towards normal. Bend towards the Refraction will normal. be less than the angle of Toward normal. Okay, it bends towards the normal. सिंपल सी बात है. ठीक है बच्चों, light would have gone like this, but it bends. Yes. ठीक है भाई, जो आई Yes, है वो आर से ग्रेटर है. ओके बेटा? फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम. So 1 mu 2 equal to sin I upon sin R. अब बताइए मुझको, अगर I की वैल्यू R से बड़ी है तो sin I की वैल्यू sin R से बड़ी होगी या नहीं होगी? yes sir Yes, sir. होगी. Yes, sir. Yes, sir. होगी. Sin I की वैल्यू, because greater angle, greater the value of sin. A smaller angle, smaller the value of sin. तो sin I की वैल्यू greater है और sin R की वैल्यू smaller है. Understand? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That means इस Yes, sir. fraction की वैल्यू कैसी होगी greater बच्चों? than one. Greater than one. Greater Greater than than 1 one. होती है. Greater than one. Greater. Right. So अपनी बुक में साइड में लिखिए, when light travels from rare to denser medium, from rare to denser medium, right? The value of mu is always greater than 1. Is always greater than 1. Don't worry. I will take up. Right?
So value of mu is always greater than 1. Now, other point. जो एयर होती है या जो वैक्यूम होता है, जो एयर वैक्यूम होता है वो तो हमेशा रेयर रहेगा किसी भी और मीडियम से, चाहे कोई भी सेकंड मीडियम हो, चाहे कोई भी सेकंड मीडियम हो, जो वैल्यू होगी, जो एयर की डेंसिटी होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो उस सेकंड मीडियम से तो हमेशा कैसी रहेगी? lesser, लेसर, Lesser. लेसर. Yes, sir. So it might be air to water, air to glass, air to whatever, air to what else, air to what not. But air is always denser than every other medium, right? So air is the rarest of all the medium. अगर एयर रेयरेस्ट मीडियम है तो जब भी लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है तो सेकंड मीडियम हमेशा एयर से डेंसर हो जाता है. तो सेकंड मीडियम में क्या होगा बच्चों? हमेशा लाइट की बेंडिंग टुवर्ड्स द Normal. नॉर्मल होगी. तो हमेशा so whenever light travels from air to any other medium, light has to bend towards the normal. It also means that angle R will always be lesser than the angle of incidence. That also means that refractive index will always be greater than, बोलिए, 1, 1. greater than 1, Always be one. greater than 1. So copy में लिखिए बच्चों. Just को सब लिखिए copy में. लिखिए whenever मेरा में खा दिया था ओके. Whenever light travels from air पानी travel from air to any other medium. Value of mu Would always be greater than 1. is always greater than 1, Greater than 1. right? So, Yes, sir. so one thing more, look at this line written there. When the refractive index of a medium is defined with respect to vacuum or air, it is called the absolute refractive index of the medium. It is called the absolute refractive index of the medium. जब कभी भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, तो वी ऑलवेज से दैट refractive index is known as absolute refractive index. When I say air, I mean vacuum. They say vacuum, I mean air. Doesn't matter. The same thing. So I rub this all as such. So just remember one point: mu water will always be greater than 1. तो मैं चाहे a mu water लिखूं और I just write mu water.
it is greater than 1. Present one. And please remember this. Yes, sir. Whenever Yes, sir. तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Air. अगर Air नहीं है vacuum. तो भी कोई बात नहीं है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है. It is also called as Absolute. absolute RI of the medium. So मैंने कहा म्यू ग्लास, तो आपको उससे क्या समझ में आया? बोलिए. That the second medium is the glass and the other The second medium is glass and the first Second medium is air or vacuum. Glass and first medium is air. Correct. That is, first medium is air and second medium is glass. First medium is vacuum, second medium is glass. Second medium is always denser than the first medium. Refractive index is always greater than 1. Whenever you find out the value of refractive index of second medium with respect to air or vacuum, इसी को हम refractive absolute refractive index भी कहते हैं, Absolute refractive और index. ये हमेशा 1 से greater होता है. बुक में लिखिए साइड में सब बातें. Note down this all in the book. Absolute refractive index is always greater than 1. Is always greater than 1. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. More the value, लिखिए बच्चों, more the value of refractive index of the absolute refractive index, more the value of absolute refractive index, more denser is the medium. More denser is the medium. And lesser the value of, लिखिए, lesser the value of angle of refraction. I expect सब लिख रहे होंगे इसको. Yes, sir. Yes, sir. लिख नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे भी नहीं लिख रहे हैं. Yes, sir. sir. सब नोट कर रहे हैं इन बातों को, इन पॉइंट्स को. Yes, 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 sir. Yes, sir. ध्रुव शर्मा, तुम नोट कर रहे हो भाई? Yes, sir. राइट, तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो. अगर lesser the मुझसे value आप, of रुक जाइए अभी, अगर मुझसे आपके फादर पूछने आए इस बार, तो मैं कुछ जवाब तो बदले में नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अभी भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो. You make it very sure in your mind. I can't be responsible for your non-studies because you always do like this. Fine, anyway. So, more the value of the absolute index of a medium, more denser it is than the medium, right? You hope I understand the point, everyone? Yes, sir. Great. Yes. Yes, So, Yes, sir. fine. So that is one way we calculate the refractive. So refractive के चार formula है हमारे पास. The first one, sin I upon sin R. More and one more thing, no. जितना ज़्यादा denser medium होगा, जितना ज़्यादा denser second medium होगा, first medium से light का उतना ही ज़्यादा deviation होगा. लाइट का उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी. बुक में लिखिए मोर द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, more the value of angle of deviation. More the value of angle of deviation. जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए एयर है, यहाँ पर हम बात करेंगे अलग मीडियम्स की, अभी हम सिर्फ एयर की बात कर रहे हैं. जितना ज्यादा सेकंड मीडियम डेंसर होगा एयर के रेस्पेक्ट में, उतना ही ज्यादा लाइट का डेविएशन होगा सेकंड मीडियम के अंदर.
और उतना ही लेसर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा डेल्टा की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी। ये सारे पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर्ली याद करके रख लीजिए। अंडरस्टैंड? कीप ऑन नोटिंग दीज पॉइंट इन द बुक, they all are very important point for that matter. Clear everybody? Now Yes, see sir. Yes, in sir. your book. Yes, sir. Now a point Yes, is sir. in your book. Yes, sir. Effect, a point is there in your book. So it is all the laws of refraction. We got the laws of refraction, refractive index, and all we have discussed. One thing I am discussing now, little addition I am doing from this book, जो आपके पास सामने आपको दिखाई पड़ रही है. Little more I am adding up. What is that? क्या रिलेशन है लैम्डा का और कैसे लैम्डा इंक्रीज और डिक्रीज होता है और कैसे वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है जब दो मीडियम लाइट दो डिफरेंट मीडियम के अक्रॉस ट्रैवल करती है। मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा, राइट? विल कंटिन्यू टुमारो दिस टॉपिक, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हमको एक फॉर्मूला मिलेगा लैम्डा के रेस्पेक्ट में। आई विल टेल यू। हाँ बच्चों, अब मेरे बात ध्यान समझिए तो दोबारा एक बार, ये इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, आई विल टेक इट। वो जो क्या होता है, जो लाइट की वेलोसिटी होती है ना, उसका फॉर्मूला मतलब क्या होता है, पता है किसी को? बताइए। Velocity is equal to f lambda. यस, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, है ना भाई? तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v equals to f lambda is the velocity of light, any wave for that matter. अब अगर मान लीजिए suppose velocity is 100 meter per second and frequency is say 20, lambda is 5, so frequency is 20 hertz, lambda is 5 meters, and velocity is 100 meter per second. This is what, अब जब लाइट ने एंटर किया किसी दूसरे मीडियम के अंदर, तो लाइट को अपनी वेलोसिटी को चेंज करना था, बट इट हैड टू कीप द फ्रीक्वेंसी अनचेंज, फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखना था। तो मान लीजिए लाइट की वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये कम करते हैं, लाइट की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो गई, frequency does not changes, so what will happen to the wavelength? बताइए। It will decrease. It will become Decrease. It will decrease and It will become decrease. Four, Four and 5 decrease. से 4 हो जाएगी। तो अंडरस्टैंड द पॉइंट, जब लाइट स्लो डाउन होती है, जब लाइट स्लो डाउन होती है तो वो अपनी लैम्डा को भी चेंज कर लेती है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, लैम्डा आल्सो डिक्रीजेस। बुक में 2 पॉइंट लिखिए छोटे छोटे, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू denser medium, when light travels from rare to denser medium, when light travels from rare to denser medium, velocity decreases, frequency remains the same. Means unchanged। Remain same. क्या रह गया भैया? wavelength. Lambda. Wavelength also
decreases. Decreases. Understand? So whenever Yes, sir. light goes from denser to rare medium, it has to decrease its wavelength. It has to decrease its velocity also. Both thing decreases. When light passes from aerodenser medium, the wavelength of light decreases and frequency remain unchanged. Okay? इसका second Yes, point sir. लिखिए. When light travels from rare to denser medium, no, denser to rare medium. Denser to rare. When light travels from denser to rare medium, बोलो अश्विन मूंगा क्या क्या होगा? अश्विन मूंगा बताइए जरा मुझे. अरे हो भैया, नहीं हो. The wavelength increases. हाँ The wavelength increases. हाँ. अरे और बोले तो बोलने में शर्माते इतना क्यों है यार? बोलने में खर्च क्या पास हो रहा है अपने? The wavelength increases. Speed of light increases. So frequency remains. The frequency remains the same. Frequency remains Frequency remains unchanged. unchanged. And refractive index is less than 1. Less than 1. Less than 1. When light travels from, Less than. लिखिए. When light travels from denser to rare medium, velocity increases. Velocity increases. दूसरा लिखिए. Angle R is less than angle. Sorry. Angle R Angle R is greater. Greater than angle. Angle R is greater than angle I. greater than angle I. velocity increases. R is greater than I. What else? Lambda. Frequency remains same. Lambda And lambda increases. remains same and lambda increases. or Frequency remains unchanged. frequency Velocity Frequency remains same. Remains unchanged. Remains unchanged. Frequency remains same. refractive index Less than Is 1. less than Less 1. than 1. less Less than 1. refractive index less than 1. Okay, is that clear? Yes, sir. Okay, बच्चों, please Yes, remember this point. Please remember these 2 points. है ना भाई? तो हम बाद में तो मेरी बात समझिए ध्यान से. जब लाइट ने एंटर किया सेकंड मीडियम के अंदर, तो बच्चों क्या क्या चेंज हुआ? एंगल चेंज हुआ और वेलोसिटी चेंज हुई एंड वेवलेंथ चेंज हुई. है ना भाई? वेलोसिटी चेंज हुई एंड वेवलेंथ चेंज हुई. हम इन तीनों चीजों के ऊपर ही मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं. हमने एंगल पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया है. अब हम करेंगे कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पर और वेवलेंथ पर. Understand? So I'm taking shortly. These points are clear to you all, everyone. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I take it again. I take it again now for another point. You can see in front of yours the speed of light in different media, relationship between the refractive index and speed of light. Yeah. Now we are talking about for all this time that when light travels from one medium to another medium, it changes velocity. So what happens is that suppose that is going in vacuum. उसकी velocity होगी 3 into 10 power 8 meter per second. And light enters from air to glass.
मान लीजिए water. Both these are denser than air. दोनों ही air से denser है. Tensor. दोनों ही air से denser है. Right. क्या होता है जब light denser rare से denser medium में जाती है? Velocity of So when the light goes from the rarer to the denser Velocity medium, decreases, wavelength its decreases. frequency Wavelength remains will same. Velocity decrease. Wavelength will also decreases. decrease. And Velocity decreases. decreases. velocity decreases, its Towards the frequency normal. remains the same. The wavelength decreases, Wait. Angle of and the incidence Ri is always is an greater angle than of 1. refraction and Ri is greater than Right 1. now, velocity decreases. That means जो second medium है, it is also providing the change in velocity of the light when light enters into it from the first medium. So 1 mu 2 is equal to velocity in the first medium upon Velocity in second medium. Velocity in the second medium. Velocity in second medium. Velocity in the second medium. velocity in second medium. Understand? Velocity Yes, in sir. first medium Yes, sir. to velocity in second medium. Velocity in the first medium to velocity in the again understand. Suppose first medium vacuum है, so velocity in vacuum upon velocity in second medium. है ना बच्चों? अब light travels fastest in the vacuum. Light travels fastest in the vacuum. That means when it enters the second medium, it will always slow down. That also means that velocity in any other medium, velocity in any other medium is always lesser. Velocity in any other medium is always lesser than the velocity in vacuum. Velocity in any other medium is always lesser than the velocity in the vacuum. Velocity in any other medium is always lesser in the vacuum. And so the refractive index with respect to air or vacuum is always greater than 1. Is always greater than 1. Is always greater than 1. Is that fine with you all? Yes, sir. Do you understand that? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. Yes, So I can define Ri in terms of velocity of light in the medium as well. I can all see this here. So the mu is equals to speed in air upon speed in that medium. All right. The Ri of a transparent medium is always Greater than Greater than 1. Greater than. Greater than 1. Greater than 1. because speed of light in any medium is always less It's always than less than that speed in in the vacuum. medium. Understand? Yes, sir. Yes. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार सब सोच लीजिए, सब absorb कर लीजिए इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में अपने. Right?
ठीक है. So Yes. suppose velocity in vacuum. So velocity in vacuum is 3.10 power 8, and velocity in glass is 2.10 power 8. और मुझको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. राइट आर्यवर्धन, यू आर देयर? आर्यवर्धन, Yes. Yes, sir. बोलिए कैसे निकालेंगे? So speed of light. हाँ, Speed of speed of light in vacuum upon speed of light in the medium. करेक्ट. तो आएगा 3/2, 1.5. मीटिंग इज अबाउट टू बी ओवर. मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ अभी. हम इसको दोबारा